Hello students, so my name is Suriya I will teach chemistry. Today you have written ANTS part test first exam. So let us discuss the solutions of first exam. So question number 26. Here in this question is from mole concept. 5.6 grams of an organic compound on burning with excess of oxygen gave 17.6 grams of CO2 and 7.2 grams of H2O. The organic compound is, see here, I am taking any organic compound and I am burning that one. So I will get X moles of CO2 and Y by 2 moles of H2O. He has given 5.6 grams of organic compound and he got 17.6 grams of CO2 and 7.2 grams of H2O. So this is the mass obtained on the complete combustion of CXHY. So now I will calculate number of moles here. You know that to calculate number of moles I have to divide this one with molecular weight. 17.6 by CO2 molecular mass is 44 and water molecular mass is 18. If you cancel this one, you will get 0.4. That means X value is 0.4. So Y by 2 value is 0.4, whereas Y value is 0.8. Now, to calculate the formula of this organic compound, so what I have taken initially, now I will take the ratio in between these two. So 0.4 by 0.8, so 1 by 2. So now the empirical formula becomes CH2. That means for every one carbon atom there are two hydrogen atoms. And here I can conclude that if I multiply this one with a particular number, which is nothing but n factor, I will get the formula here. So obviously if I multiply this one with 4, CH2 into 4 to get the molecular formula, I will get C4H8 is the answer. C4H8 option B. So 26th question, option B is correct. We will move to question number 27. 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide solution is. Oxalic acid formula सबको पता है, H2C2O4. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है COOH. इसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH को. देखो, दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. केमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस. आई हैव टेकन 50 ml of 0.5 molar oxalic acid. So number of equivalents is equal to volume into molarity into n factor. This is the formula you have to apply here. So 50 ml into molarity is 0.5 and the normality is 2. So that is equal to 25 ml of sodium hydroxide. 25 ml into molarity. NaOH का n factor 1 ही है, so इसलिए 1. So molarity is equal to 50 into 0.5 into 2 by 25, so 2. So that means 4 into 0.5 2 molar. आपको याद रखने वाले पॉइंट ये हैं, 2 मोलार NaOH कॉन्सेंट्रेशन है ये 2 मोलार. 2 मोलार का मतलब है 2 moles present in 1 liter. 2 moles. That means 2 into 80 grams present in 1000 ml. So 80 grams 1000 ml में होते तो इन्होंने पूछा है 50 ml में कितना ग्राम्स रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. X is equal to 50 into 80 by 1000. So 4. Unit is grams. So 27 question, option is A. Question number 28. What is the oxidation number of nitrogen in ammonium sulfate? So ammonium sulfate is NH4 twice SO4.
So it splits into 2NH4 plus SO4 2 minus. So I have to calculate oxidation state of nitrogen in this one. So I'll take this one as X for nitrogen. Hydrogen 4 into plus 1 is equal to plus 1. X is equal to 1 minus 4 minus 3. So option is D. I hope you understand. So this is very fundamental and basic question. So now I am taking question number 29. 1 mole of potassium chlorate is thermally decomposed and excess of aluminium is burnt in the gaseous product. How many moles of aluminium oxide are formed? See here. If you heat KClO3, KClO3 decomposes to give KCl plus O2. To balance this one, I'll multiply this one to 2. So 2 3s are 6 oxygen atoms. So 3 O2. 3 moles of oxygen is released by heating 2 moles of KClO3. Here what he is asking, 1 mole of potassium chlorate is thermally decomposed. 2 moles के लिए 3 moles मिलेगा. So 1 mole के लिए 1.5 होगा. How many moles of aluminium oxide are formed and excess of aluminium is burnt in the gaseous product? Gaseous product is oxygen. Oxygen के सामने aluminium ले आके burn किया है. So Al plus O2 gives rise to Al2O3. So this is the basic reaction of aluminium with oxygen. Here you have to balance this one. To balance this one, what I will do? I will multiply this one with 2. The reason is 3 is an odd number. 2 3s are 6. 3 O2. Here 2 into 2 4 moles of aluminium. See, 3 moles of oxygen is generating 2 moles of Al2O3. But we have 1.5 moles. I can write this one as a 3 by 2. So 3 by 2 mole generates 1 mole of Al2O3. So the option is A. I hope you understand. Question number 30. A gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4 by weight. Therefore, the ratio of the number of molecules. Oxygen and nitrogen gases are given. Oxygen, nitrogen. Oxygen how many grams? 1 gram. So nitrogen how many grams? 4 grams. Oxygen is O2 and 2. These many grams are present. Molecules calculate करने के लिए इसको number of moles में convert करना पड़ेगा. 1 by 32. So 4 by 28. 1 by 32. Am I clear? So now, number of molecules. Sir, number of moles 1 by 32 and 1 by 7 होते तो यहाँ आपको number of molecules बनेगा 7:32. So option is C. आपको प्रोसेस बता है. So 1 by 32 है. 1 by 32 मोल्स होते तो इतना मोल्स होते तो इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए Na से मल्टीप्लाई करो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको भी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो. सो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा. ऐसा मिला है 7 by 32. सो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी. नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31. इन्होंने वहां दिया है 10 to the power of 21 molecules are removed from 200 milligrams of CO2. Then the number of moles of CO2 left. Molecules left नहीं पूछा है, यहाँ number of moles of CO2 left पूछा है. पहले मैं लिखूंगा. Question number 31 में 10 to the power of 21 molecules are removed. किसे रिमूव किया है? 200 milligrams of CO2. सो मास दिया गया है. ये मास को हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे. अभी हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते तो सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 200 into 10 to the power of -3 grams. मिलीग्राम्स को ग्राम्स में मैंने कन्वर्ट किया हूँ सर. कन्वर्ट करते तो मुझे 200 into 10 to the power of -3 grams आया है by 44. इसको सिंपलीफाई कीजिए. इसको सिंपलीफाई करते तो आपको आ जाएगा 4.54 into 10 to the power of -3 moles आ जाएगा सर. नाउ आई वांट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मैं क्या करता हूँ, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ.
4.54 into 10 to the power of minus 3 into 6.023 into 10 to the power of 23. So 23 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power of 20 होगा, इसको आप 6 4s are 24, इसको अप्रॉक्सीमेटली 2.73 into 10 to the power of 21 आ जाएगा सर. सो मैं पहले ही इसको कैलकुलेट करके रखा हूँ सर, इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूँ. आपको कैलकुलेट करते तो उतना ही आंसर आएगा, 2.73 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 21. इससे हम 10 टू द पावर ऑफ 21 मॉलिक्यूल्स को हटाएंगे सर. 10 टू द पावर ऑफ 21 मॉलिक्यूल्स को हम हटा देते तो 2.73 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 21 माइनस 10 टू द पावर ऑफ 21, तब आपको मिलेगा 1.73 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 21. अभी हमको मोल्स चाहिए, एक्चुअली बचा हुआ मॉलिक्यूल्स आया है हमको. अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.73 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 21 बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23. इसको सिंप्लीफाई करते तो अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3. 2.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 आपको ये ऑप्शन मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये कैलकुलेशंस मैं ऑलरेडी किया हूँ सर, इसलिए तो मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ, थोड़ा आप इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 एक अच्छा क्वेश्चन है सर. वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर containing NO2 and N2O4. NO2 and N2O4 is 27.6. 27.6. The mole fraction of N2O4 in the mixture is mole fraction of N2O4 in the mixture is. So vapor density is equal to molecular weight by 2. ये हमको पता है. सो मिक्सचर के अंदर NO2 का मोल फ्रैक्शन हम x पकड़े तो N2O4 का 1 माइनस x रहेगा. सो इसको फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ NO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4. This is the formula. You should know this one. Vapor density of the mixture is equal to, so mole fraction of NO2 into vapor density of NO2 plus mole fraction of N2O4 into vapor density of N2O4. So आपको NO2 का मॉलिक्यूलर वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 डालते तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा. N2O4 को मॉलिक्यूलर वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 डालते तो आपको वेपर डेंसिटी आ जाएगा. अभी देखिए, इसको ऑलरेडी हम लोग x पकड़े हैं, x इंटू NO2 का मॉलिक्यूलर मास आपको मिलेगा, ये 14 है और 32 46 है, 46 बाई 2 का मतलब 23. N2O4 में 2 टाइम्स ऑफ 46 92 है, इसलिए 46 इसका वेपर डेंसिटी बनेगा. 1 माइनस x इंटू 46. वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इन्होंने दिया है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपको मिलेगा 27.6. इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा सर. सिंपलीफाई करें तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा 0.8. x का वैल्यू 0.8 आ जाते तो ये 0.8 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2. अभी हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4. सो 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2. सो 0.2 B इज द ऑप्शन. एक का 0.8 होते तो दूसरे का 0.2 होगा सर. सो बाइवेलेंट आई मीन एक मिक्सचर लेकर आप इसमें 2 कंपोनेंट्स होते तो बाइनरी मिक्सचर लेते तो एक का x होते तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस x रहेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ए सैंपल ऑफ अल्यूमिनियम हैज ए मास ऑफ 54 ग्राम्स. सो अल्यूमिनियम सैंपल मास कितना है, 54 ग्राम्स. याद रखिए अल्यूमिनियम एटॉमिक वेट 27 ग्राम्स है, 54 ग्राम्स के अंदर 2 मोल्स होगा. आफ्टर दैट व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स. सो 2 मोल्स मैग्नीशियम एटम्स, एक मोल का मैग्नीशियम का 24 ग्राम्स रहेगा, 2 मोल्स का 2 इंटू 24 48 ग्राम्स रहेगा. सो 33 आंसर का क्वेश्चन का ऑप्शन है
C. I hope you understand. 2 moles दिया है, 2 moles में जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा उतना ही मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम का लेना है. सो 2 moles, 1 मोल का 24 ग्राम्स है, 1 मोल का 24 होते तो 2 मोल्स के लिए आपको बनेगा 48 ग्राम्स. इसके बाद एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4 इज Fe3O4. क्वेश्चन नंबर कितना है सर? 34. इन Fe3O4 whenever he is asking about average oxidation state, you consider this one as x. 3 into x plus 4 into minus 2 is equal to 0. This is the way of calculating average oxidation state. Obviously x is equal to 8 by 3. So this is minus 8, उस तरफ जाएगा plus 8, 8 by 3. So option B. 34 question का option B. Next, I am moving to question number 35. In question number 35, the volume of 0.1 molar oxalic acid that can be completely oxidized by 20 ml of 0.025 molar KMnO4 solution. So KMnO4 is oxidizing agent, oxalic acid is reducing agent. So number of equivalents of oxalic acid is equal to number of equivalents of KMnO4. Here he asked about volume of oxalic acid. So volume is V. So molarity is 0.1. N factor is 2. So this is nothing but number of milli equivalents. So volume I have taken in ml. So I will get answer also in ml. Here 20 ml into 0.025 molar into. So KMnO4 का N factor है 5. So KMnO4 in acidic medium, it changes its oxidation state from +7 to +2. Change in oxidation state is N factor for oxidizing agent or reducing agent. So here I will take 5. So volume is equal to 20 into 0.025 into 5 by 0.1 into 2. So 0.1 into 2, 0.2 sir. 0.2 20 में 100 टाइम्स जाएगा. सो 2.5 into 5 आएगा सर. 12.5 ml. We have taken in ml. So you will get option as C for question number 35. So now I am moving to question number 36. Question number 36. The number of electrons required to balance the following equation. किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया आपसे, तब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर दीजिए. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट NO3 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू NO. ये +5 है +2. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3. सो 3 electrons are required. So option is C for this one. Question number 37. 1.2 grams of metal displaces 1.12 liter of hydrogen. 1.12 liter of hydrogen. So now I am talking about if 1.2 grams of metal is displacing 1.12 liter of H2, he asked that equivalent weight of metal would be. Equivalent weight calculate करना है तो so hydrogen का 1 equivalent is equal to 11.2 liters. 11.2 liters. 1 equivalent of metal has the ability of replacing. So 1 equivalent volume of hydrogen. 1.2 grams replacing 1.12 liters. 11.2 liters are replaced by how many grams? Obviously, so 10 से मल्टीप्लाई करते तो 11.2 आएगा. So 10 into 1.2 is 12 grams. So 12 grams is the answer. So 12 grams option is B. Next, I'm moving to question number 38. Molarity of H2SO4, which has a density 1.84 gram per cc at 35 degrees centigrade and contains 98% by weight. 98% by weight means weight by weight percentage. Here molarity formula is weight by weight percentage into density into 10 by so molecular weight of solute. Solute is H2SO4 only. So 98%. So density is 1.84 into 10 by so molecular weight is, so here you will get 1.84 into 10, 18.4 molar.
18.4 molar, option is B. For 38 question, option is B. Next, I am moving to question number 39. The number of anti-bonding electron pairs. He asked about anti-bonding electron pairs in molecular ion on the basis of molecular orbital theory is for O2 2 minus. O2 2 minus में anti-bonding electron pairs कितना है ये पूछ रहा है ये. So this is energy. नाइट्रोजन तक sp मिक्सिंग रहेगा, ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं रहेगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स. 1s2 2s2 1 2 3 4 1s2 2s2 2p4. 16 electrons I have to fill. To fill electrons in this one, I have to follow all the rules and regulations, 3 principles: Hofbauer principle, Hund's principle, Pauli's exclusion principle. All the things I have to follow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑक्सीजन के लिए. लेकिन O2 2 माइनस दिया है. O2 2 माइनस के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा. यू नो दैट दिस इज बॉन्डिंग सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s. सो दीज आर बॉन्डिंग, बट दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 पेयर्स आर प्रेजेंट. 4 पेयर्स आर प्रेजेंट. सो इसलिए ऑप्शन होगा ये. क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 40. इन क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से पढ़िएगा. which of the following molecule has highest bond energy? He didn't ask about the given bond, he asked about the molecule. So whenever he asked about molecule, in nitrogen there exist 3 bonds. Obviously नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए बी दिया गया है आंसर. सो नहीं है तो लोन पेयर्स जिसके ऊपर नहीं होगा इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगा. उस कंडीशन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगा. लेकिन मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया है, मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगा. सो 40 क्वेश्चन का ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 41. सो दिस इज solubility from chemical bonding. Which one is least soluble in water? If I am taking beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, all of them form, so these type of fluorides. Fluorides solubility decreases from top to bottom. The reason is Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+. Charge density decreases. By decreasing charge density, obviously hydration energy also decreases. Hydration energy of beryllium is maximum, so that is why BeF2 is more soluble, and Ba2+ का hydration energy बहुत कम रहेगा, इसकी वजह से soluble नहीं हो पाएगा. Hydration energy, lattice energy, ये दोनों का खेल है. हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, कंपाउंड इज सॉल्युबल. इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, सो ऑब्वियसली कंपाउंड इज इनसॉल्युबल. सो लीस्ट सॉल्युबल इज बेरियम फ्लोराइड, BaF2, लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर. सो ऑप्शन इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल? आइसोइलेक्ट्रॉनिक. Isoelectronic means total electrons should be same. जो पेयर्स उन्होंने लिया है ना, इसके अंदर total electrons should be same. सेकेंड वन. इसके साथ साथ इन्होंने पूछा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल. सो आइसोस्ट्रक्चरल का मीन्स सेम ज्योमेट्री. सर एक छोटी सी ट्रिक है सर. नाइट्रोजन कार्बन बिलोंग्स टू सेम पीरियड. sulfur nitrogen, carbon sulfur, chlorine carbon, all these belongs to different periods. You can observe that all of them are not having
same electrons. The reason is if period is different, most probably electrons भी differ हो जाएगा. यहाँ एक ही बचा है NO3 minus CO3 2 minus. NO3 minus में so नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 3 8s are 24. सो नाइट्रोजन को एक ऐड करते तो ऑक्सीजन, सो 32 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाएगा. 3 8s are 24, 6 to 8 इसके अंदर भी 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा. इसलिए NO3 minus CO3 2 minus आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक. एट द सेम टाइम देयर ज्योमेट्री इज सेम, planar, trigonal, planar. So option is A for 42. Question number 43. Number of molecules or ions from the following in which the central atom is involved in sp3 hybridization. अभी NO3 minus के बारे में हम डिस्कस किए थे. So 43 में NO3 minus sp2 BCl3 sp2 ClO2 minus ClO3 minus. These are sp3. All oxides of chlorine, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन से हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, HClO3 HClO2 HClO. हाइड्रोजन हटाने के बाद कॉन्जुगेट बेस आएगा ना, ClO4 माइनस ClO3 माइनस ClO2 माइनस ClO माइनस, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सो इसलिए इसका ऑप्शन बनेगा 2 का मतलब ए का ऑप्शन ये है, इसके अंदर वैल्यू 2 है. नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44. इन क्वेश्चन नंबर 44 ही इज आस्किंग व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम xenon है, xenon के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूटिलाइज होगा. इसका मतलब बचेगा 3 लोन पेयर्स रहेगा. H3O प्लस में एक ही लोन पेयर रहेगा, क्योंकि H2O में 2 लोन पेयर्स रहेगा. एक H प्लस को डोनेट करने के बाद एक ही बचेगा. XeF4 में आपको 2 लोन पेयर्स रहेगा, क्योंकि xenon 8 इलेक्ट्रॉन्स 4 यूटिलाइज हो गया है, 4 बचा है, इसलिए 2 लोन पेयर्स. XeF6 1 लोन पेयर. सो ऑब्वियसली XeF2 ऑप्शन A. Now I am moving to the bond strength in O2 plus O2 minus O2 2 minus follows the order. Question number 45. इन्होंने दिया है O2 plus O2 minus O2 2 minus. Bond strength पूछा है. So bond strength is directly proportional to bond order. So ऑक्सीजन का bond order 2 है. So O2 minus O2 2 minus O2 प्लस में 2.5 है, इसका 1.5 रहेगा, इसका 1 रहेगा. सो बॉन्ड ऑर्डर मोर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर. O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 46. बॉन्ड ऑर्डर इन NO माइनस इज NO is having 7 electrons plus oxygen is having 8, 1 extra electron. Total number of 16 electrons. It is similar to O2. So bond order is 2. इसका आंसर है 2. 46 का NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर है 2. क्वेश्चन नंबर 47. डिफरेंस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन CCN4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सिग्मा बॉन्ड्स रहेगा. पाई बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पाई बॉन्ड्स रहेगा. डिफरेंस इज 0. क्वेश्चन नंबर 47. आंसर इज 0. 48. फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन SO2 इज. सल्फर ग्रुप नंबर इज 6 sir. 6 valency electrons are there. So 2 oxygen atoms are bonded to this one. 2 electrons are left. So formal charge पूछा है. Formal charge is equal to valency electrons minus half into bonding electrons minus number of lone pair of electrons. So valency electrons 6 रहेगा, half into 4 bonds हैं 8. lone pairs नहीं है सर, lone pair of electrons डालना पड़ेगा. half 8 by 2 is 4 minus 4 minus 2 minus 6 minus 6 is 0. So 48 option is 0. Question number 49. We want to prepare 2 liters of 0.025 molar CH3COH solution. The amount of CH3COOH dissolved is. ठीक है सर, हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा. So molarity is equal to, so weight by molecular weight, so into 1000 by volume in ml.
और लीटर्स में भी ले सकते हैं। सो मोलारिटी कितना है सर? 0.025। सो वेट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, CH3COOH। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 carbon atoms is 24, 16 16 32 4 60 सबको पता है। सो 1000 by 2000 ml, 2 लीटर्स का मतलब 2। सो वेट इज इक्वल टू 120 इंटू 0.025। सो कितना आएगा सर? 120 इंटू 0.025। सो 120 इंटू 0.025 इज 0.25। 4 0.25 is 1 sir. So 3 into 4 into 0.25. So obviously answer is 3. So 3 grams is the answer. So 50. Question number 50. Na2SO4.XH2O Na2SO4.XH2O contains Na2SO4 and H2O in equal number of moles. मैं देना चाहता था इक्वल मास, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आ गया है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आते तो ये 1 होते तो ये भी 1 रहेगा। सो ऑब्वियसली x का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो मान लीजिए एग्जाम में कभी इक्वल मासेस देते तो तब Na2SO4 का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। मास कैलकुलेट करने के बाद उतना मास H2O रहेगा। सो मान लीजिए Na2SO4 का मास इक्वल मास रेशियो में रहते तो 46, सल्फर का 32, 64, अप्रोक्सीमेटली 142 पकड़िए। 23, 46, 32, 64, 12, 142 अप्रोक्सीमेटली पकड़िए, 142 एंड वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18। तब x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ मुझे देना था एक्चुअली इक्वल मास रेशियो, लेकिन मैंने दिया था इक्वल मोलार रेशियो, इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया। Na2SO4 इक्वल मोलार का मतलब Na2SO4 1 मोल रहते तो ये भी 1 मोल रहेगा। सो 1 मोलार यूनिट के अंदर ऑब्वियसली 1 ही रहेगा। इसका आंसर रहेगा 1। थैंक यू। आई होप यू हैव रिटन एग्जाम वेल, क्योंकि ये पहला एग्जाम है। सो पेपर भी ऐसा बनाया है, थोड़ा मोटिवेट देने के लिए, थोड़ा इजी टू मॉडरेट बनाया गया है। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर विल गेट चैलेंजिंग पेपर्स फॉर यू।